ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೀಲವೇಣಿ ಉಮೇಶ್ ಅಂತ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಉಮೇಶ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಷಾರಾಣಿ ಅಂತ ಅವರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಖುಷಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿಟ್ಟಿರೋದು ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾವೇ ಯಾವಾಗಾದರೂ ವಾಕ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1-2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಟ್ಟುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಲೇಔಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆನೇ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಗಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಪ್ರೇರಣಾ ಗ್ರೀನ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂಬರ್ 51 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಪ್ರೇರಣಾ ಗ್ರೀನ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬೂದಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ 800 ಮೀಟರ್ಸು, ಆ ಕಡೆ ಬಂದರೆ 500 ಮೀಟರ್ಸು, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೇರಣಾ ಗ್ರೀನ್ ವೆಂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಗೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇವಾಗೇ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು. ಅಲ್ಲಿಗಿನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. मेरा नाम रंजन कुमार है और ये मेरा वाइफ है, इसका नाम गीतांजलि है. और मेरा कैंटीन है. मैं 15 साल से इधर बुद्धिगिरी क्रॉस में मेरा कैंटीन है. तो इसका बारे में मेरा दोस्त की वजह से मेरे को पता चला ये प्रेरणा वेंचर के बारे में. जब पहली बार हम आया इधर, मेरा वाइफ और मैं दोनों आया, तो इधर कुछ नहीं था, फिर भी हमको बहुत पसंद हुआ. ये जगह देख के हम साइट सिलेक्शन किया था. तो अभी मेरा 55 है जो साइट है उसको मैं सिलेक्शन किया है. और इधर हमको सिलेक्शन किया था, हमको बहुत अच्छा लगा ये साइट. हम लोग को रहने के लिए, घर बनाने के लिए ये एरिया देख के हमको पसंद हुआ. तो बाद में हम लोग इधर का जो रूल्स है, जो लोन फैसिलिटी भी है, सब देख के हम लोग को इसको पसंद किया है. इधर का अंदर जैसे रोड है, लाइट है, पानी है, सब अच्छा है. गार्डन भी है, बच्चे लोग खेलने के लिए गार्डन भी है. कुछ प्रॉब्लम नहीं है. कोई आदमी एक रहेगा ना, उसको हर फैसिलिटी सब अवेलेबल है. నా పేరు వినోద్ అండి. ఇక్కడికి వచ్చి ప్రేరణా యూనివర్సిటీ విజిట్ చేశాను. మా ఫ్రెండ్ ఇక్కడ రెఫర్ చేశాడు. వచ్చినప్పుడు చాలా ఫ్లాట్ ల్యాండ్ ఉండింది, అక్కడ డెవలప్మెంట్ కూడా లేదు. బట్ వీళ్ళు ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్రెడీ చూశాను. ఆ ప్రాజెక్ట్ చూశాక చాలా డెవలప్మెంట్ ఉంది, ఆ కన్సిస్టెన్సీగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. దాని నియర్ బై చాలా వేర్ హౌసెస్, రెంటల్ ఇన్కమ్కి చాలా బెస్ట్ సోర్స్ అవుతే అనిపిస్తుంది మాకు ఇక్కడ చూస్తుంటే. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రైజింగ్ కంపేర్డ్ టు ద మార్కెట్ లైక్ ఈజ్ అ మచ్ చీపర్. కమింగ్ టు ద డెవలప్మెంట్, లైక్ 3 పార్కులు బిల్డ్ చేశారు. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఇక్కడ ఏంటంటే అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్, అండర్ గ్రౌండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇట్స్ టూ గుడ్. ఇక్కడ మేము వచ్చినప్పుడు phase 1లో తీసుకున్నాం. వీళ్ళకి టోటల్ 4 phases ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ ఫేజ్ వచ్చి 3.5 acres అయితే బిల్డ్ చేశారు ఇక్కడ వీళ్ళు. సెకండ్ ఫేజ్ అయితే వర్క్ జరుగుతుంది. ద సేమ్ ఈవెన్ నేను డౌట్ఫుల్గా వచ్చి చెక్ చేశాను సెకండ్ ఫేజ్ ఎలా జరుగుతుంది, వాళ్ళు చెప్పినట్టే చేస్తున్నారా లేదా అనేసి. సెకండ్ ఫేజ్ అయితే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఎలా చేశారు సేమ్ ఫేజ్లోనే అదేవిధంగా డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు. ద టోటల్ 4 phases లోపల మొత్తం స్విమ్మింగ్ పూల్ అనేది, జాగింగ్ ట్రాక్ అని కానీ, ఈవెన్ ద నెట్, క్రికెట్ నెట్ కానీ, ఈవెన్ యోగా సెంటర్, క్లబ్ హౌస్ అనేది ఎవ్రీథింగ్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. కంప్లీట్ ఎలా ఉంటుందంటే విల్లా ప్రాజెక్ట్ లాగా ఉంటుంది. యూ విల్ గెట్ పీస్ అండ్ యూ విల్ గెట్ యువర్ ఓన్ స్పేస్. ఇక్కడ నేను 24 తీసుకున్నాను. నాతో పాటు నా ఫ్రెండ్ కూడా తీసుకున్నారు. మేము
ప్లాన్గా ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఒకే చోట తీసుకోవాలనేసి 24 and 15 ప్లాన్గా తీసుకున్నాం.